Hi to everyone. Namaskar to all the students of CA aspirants. Recently we started a Bills of Exchange chapter, right? Before going for this second problem, my dear student, I tell you few things that you need to remember, especially in this particular video, before going for problem. Two things you remember: when the bill is renewed, when the bill is returned. Here renewal means what? Please remember what happened in case of renewal. Renewal means the drawee requested the drawer, debtor requested us. Instead of drawer, we can call it as a drawer, means us. The debtor requested us to cancel the old bill and draw a new bill. Extending that, telling that please extend the credit term. I repeat, renewal of a bill means debtor is not in a position to pay money to us on the due date. In such case, he requested us to renew the bill. What happened when renew the bill? First, we have to cancel the old bill. बाद में क्या करना? Draw the new bill plus interest, because when you are extending the terms of the bill, for example, if you are extending 2 months or 3 months, for that period the drawer, means we charge some amount of interest to the drawee, means debtor. That is what? These are the things happened, my dear student, in case of renewal of the bill. Here interest is what? Interest is income to us. Us means drawer. Us means what? Drawer, because we are drawing the bill. When it is a income, my dear student, we have to credit it. मालूम हुआ क्या बोले मैं? रिन्यूअल ऑफ ए बिल में क्या होता? ओल्ड बिल कैंसल होता, न्यू बिल ड्रा करते, अलॉन्ग विथ व्हाट? इंटरेस्ट. और इंटरेस्ट तो हमको इनकम रहता बाद में. व्हाट यू मीन बाय रिटायरमेंट ऑफ ए बिल? दिस इज डेड ऑपोजिट ऑफ रिन्यूअल ऑफ ए बिल. इन रिटायरमेंट वो डेटर रहता है ना, वो डेटर will pay the amount of the bill to us before the maturity. What? Before the maturity. 1 महीने 2 महीने पहले हमको पैसा देते उन्हें पैसे दिया तो हमें क्या करते हैं? We receive the cash. Retirement of bill में क्या होता? We means what? Drawer. Drawer will receive the cash. Cash is to be debited. वो 1 महीने 2 महीने पहले पैसे देता है ना उन्हें, इसके वास्ते हमें क्या देना उनको? वी हैव टू गिव हिम अ रिबेट. सी द इंग्लिश वर्डिंग, द परदेशी लैंग्वेज. वी हैव टू गिव हिम द इंटरेस्ट, रिबेट. वो रिबेट उनको दिया तो हमको क्या होता हो? एक्सपेंसेस होता. डिस्काउंट कहते बोलते हैं. वो डिस्काउंट, वो रिबेट हमको एक्सपेंसेस होता, हमको बोले तो ड्रॉयर को. वो एक्सपेंस पे भी डेबिट करना. अब एंट्री क्या होता? कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट, टू बिल्स रिसीवेबल लिखना, बिकॉज द ड्रॉई मीन्स डेटर डिस्चार्जिंग द बिल, सेटलिंग द बिल, honoring the bill, making the payment of money to us. All these are one and the same. To us before the due date of the bill. Did you understood, my dear student? In case of renewal, क्या करना? ओल्ड बिल कैंसल करना, न्यू बिल ड्रॉ करना अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट. रिटायरमेंट ऑफ ए बिल बोले तो वी आर रिसीविंग द मनी फ्रॉम द डेटर और ड्रॉई well in advance before the maturity of the bill, for which we have to give the rebate. Rebate is discount to us or discount or expenses according to the 5 star, according to the Panchatareru, debit karna expenses ko. I hope you got it right. Fine. Now let me move on to the next problem.
Here it is a class 2, my dear student. This question is asked in CA Foundation May 2019 paper for 5 marks. It is a problem related to bills of exchange. Always remember, look towards the last line of the problem. Show the journal entries in the books of Akshay. Who is Akshay? ಕನ್ನಡ ಮೇ ಅಕ್ಷಯ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೂ ಈಸ್ ಅಕ್ಷಯ್? ನಾನು. ಹೂ ಈಸ್ ಅಕ್ಷಯ್? ಹಮ್. ಹೂ ಈಸ್ ಅಕ್ಷಯ್? ಐ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡ್, ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್, ಹಿಂದಿ ವರ್ಡ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಯಾರು? ಅಕ್ಷಯ್ ನಾನು. ಕೌನ್ ಅಕ್ಷಯ್? ಅಕ್ಷಯ್ ಹಮ್. ಹಮೇ ಅಕ್ಷಯ್. ಐ ಆಮ್ ದ ಅಕ್ಷಯ್. Because we have to pass the entries with narration in the books of Akshay. Now you move on to the first para of the problem. Shall I read? On 1st January 2018, Akshay draws. Who draws? Akshay draws. When Akshay draws, who is Akshay? Akshay is drawer. Akshay is Nanu. Who is drawer? Akshay is drawer. Let us have the working sheet in your notes. When the bill is drawn? The bill is drawn on 1st January 18. कब bill draw किए? 1st January 18. Akshay is equals to drawer. Akshay कौन? Nanu. Or else you can write in Hindi hame, hum, whatever you want you can write. Who is Akshay? Akshay is hame or hum. Fine. How many bills you drawn? 2 bills. First bill, second bill. See, amount is 16,000, 25,000. First bill amount is how much? 16,000, 25,000. कैसे solve करना? Read and write immediately. Okay, fine. The bills of exchange for 16,000 is for 2 months. पहला bill का duration कितना है? 16,000 है. Sorry, 2 months है. पहला bill का duration is how many months? It is of 2 months. बाद में while the bill of exchange of 25,000 is for 3 months. The duration of the second bill is 3 months. हुआ अब 2 bills draw हुआ. देखिए ना बाद में क्या होता. These bills were accepted by Vishal. Who is Vishal? Vishal is drawee. Vishal is acceptor. Who is Vishal? Let me write here. Vishal is acceptor. Who is Vishal? Vishal is avanu. Unhe. He is nothing but what? Debtor. In accounting language, Vishal is called what? Debtor. He is a acceptor. He is a drawee. कौन हो? Drawee. Acceptor. उन्हें avanu, debtor. These are the wordings that every student should understand. Then only you feel so easy with the chapter. बाद में क्या हुआ? On 4th April 2018, कब जी? 4th April 2018, Vishal requested Akshay to renew the, क्या करना? Renew the first bill. ఎప్పుడు? 4th April को. Shall we write? On what date? On 4th April 18 को renew the first bill. Very good. अब renew करना है तो क्या करना? A point. Cancel the first bill. बाद में क्या करना? Draw the new bill along with what? Along with interest.
just now with 5 to 6 minutes before I explain किया है ना, whenever our renewal of a bill is happened, we have to cancel the old bill, we have to draw the new bill, while drawing the new bill we have to add the interest. देखिए ना कितना है interest, with interest of 15% per annum for a period of how many months? 2 months. Interest for 2 months. ओ न्यू बिल का ड्यूरेशन कितना हुआ? अब 2 महीने हुआ. व्हाट इज द न्यू बिल ड्यूरेशन? फ्रॉम April 4 से 2 महीने. गुड. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द न्यू बिल? हाउ टू कैलकुलेट दिस? टेक द ओल्ड बिल अमाउंट. नाउ when you are cancelling the old bill is 16,000. now we have to draw the new bill, right? New bill along with what? Interest. कैसे interest करना? 16,000 plus 16,000 into कितना परसेंटेज दिए उन्हें इंटरेस्ट? 15% दिए, इंटू 15% इंटू 2/12. देखिए ना कितना होता अब? 16,000 plus, take the calculator my dear student, work out the amount of this interest. कैसे इंटरेस्ट करना मालूम है ना? 16,000 into 15% into 2 divided by 12. कितना आया अब? 400 आया है ना. कुल मिला के न्यू बिल कितना हुआ? 16,400 हुआ. Did you understood my dear student? This is for how many months? A duration of how many months? It is a duration of 2 months bill. I hope you got it my dear students, right? बाद में क्या हुआ? ये तो proposal. Then Akshay agrees the proposal. अक्षय प्रपोजल को अग्री भी किया. On 25th March 18, विशाल रिटायर्स. क्या किए? रिटायर्स किए. कौन सा? एक्सेप्टेंस ऑफ 25,000 मीन्स सेकेंड बिल विथ इंटरेस्ट रिबेट. और रिबेट कितना है? वो रिबेट डिस्काउंट 250 है. कब? 25th March 18 को. शैल वी राइट? 25th March 18 क्या हुआ? रिटायर्ड सेकेंड बिल. रिटायर्ड सेकेंड बिल मीन्स cash received. How much cash you people will receive? After a rebate of 250. Cash received out of 25,000, subtract the rebate, 24,750 cash received. Rebate means expenses. वो कितना है? 250 है. My dear students, I am going in a slow way. Since this is a second problem, right? Try to understand in a better way. Listen to this video very properly. Thereafter, I increase my speed of teaching. Okay, ये तो online teaching है ना? If I go in a speed way, you feel so difficult in understanding. That's why I am going in a slow manner. Please give your comment and like. Subscribe my channel. Share with your maximum friends. Okay. Retire मालूम हुआ है ना? Retirement बोले तो क्या? The drawee means who? The Vishal will pay the bill amount before the maturity date. For that हमें क्या देना पड़ता? उसको रिबेट देना पड़ता. सी रिटायरमेंट मीन्स विशाल पैसे देते मीन्स अक्षय मीन्स नानो हम क्या करते हैं? उससे पैसे रिसीव करते. सो कैश रिसीव्ड, रिबेट को सब्ट्रैक्ट किया तो 24,750 आया. रिबेट बोले तो एक्सपेंसेस कहते, डिस्काउंट कहते, वो तो 250 हो गया. बाद में क्या हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है माय डियर चिल्ड्रन. बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूड बिल. कौन सा बिल? रिन्यूड बिल. बिफोर द ड्यू डेट विशाल बिकम्स इंसॉल्वेंट. कौन इंसॉल्वेंट हो गया? विशाल बिकम्स इंसॉल्वेंट. Vishal means what? Debtor.
debtor is insolvent. कन्नड़ा में उसको अवनुकते बोलते हैं. बिकॉज अक्षय नानु, कौन अक्षय? नानु. विशाल कौन? उन्हें, हिंदी में उन्हें. बाद में क्या हुआ? 50 पैसा इन ए रूपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट. ओनली 50 पैसे रिकवरी करते हैं. 1 रुपया में कितना पैसे रहते हैं? 100 पैसे. 100 पैसा में 50% क्या हुआ? 50% क्या हुआ? रिकवर्ड हुआ. और 50% क्या होते हैं? उन्हें बैड मीन इंसॉल्वेंट हुआ है ना, डेटोर इंसॉल्वेंट हुआ. डेटोर इंसॉल्वेंट हुआ तो बैड डेट्स आता. शैल वी राइट? बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूड बिल बोल रहे हैं. व्हाट इज द डेट ऑफ द रिन्यूड बिल? 4th April, राइट? हाउ मेनी मंथ्स? 2 months. कैसे फाइंड आउट करना डेट? हम तो 4th April है. अप्रैल मीन्स 4 अप्रैल. अप्रैल के बाद 2 महीने मीन्स मई जून. कौन सा मंथ लिखना पड़ता हमें? आई कंटिन्यू. कौन सा मंथ? सी हियर तो अप्रैल है. अप्रैल को 2 महीने ऐड करना. 2 महीने ऐड किया तो अप्रैल के बाद मई जून आता. गुड. आई राइट जून. कौन सा ईयर? ईयर तो 18 है. अब डेट क्या लिखना मालूम हो रहा? मैं क्या बोल रहा हूं? अप्रैल को रिन्यूड बिल ड्रॉ किए, 2 महीने टाइम दिए. अप्रैल के बाद मई जून. ओके. बाद में क्या है? ये तो अप्रैल 4 है. 4 days. 4th of April. हाउ मेनी ग्रेस डेज इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज? 3 ग्रेस डेज. हम कौन सा डेट में है? 4th डेट में है. 4th डेट को 3 ग्रेस डेज ऐड करना. 4 को 3 ग्रेस डेज ऐड किया तो कितना होता? 7th जून. मालूम हुआ मैं क्या बोले? My dear students, did you understood how to work out the due date of a bill? Simple logic. For that, take the date of a bill, add the duration of the bill, add plus 3 grace days. Means क्या होता? 4th डेट को 3 days ऐड किया तो 7th होता. गुड. 4th अप्रैल को 2 महीने ऐड करना. अप्रैल के बाद क्या आता? मई जून आता. ईयर रिमाइन द सेम. हुआ? आई रिपीट ऑफ, आई डोंट वांट दिस अननेसेसरली. मालूम हुआ है ना? अब 7th जून को क्या हुआ? इंसॉल्वेंट. कौन इंसॉल्वेंट हुआ? देखिए ना इधर. विशाल बिकम्स इंसॉल्वेंट. विशाल इंसॉल्वेंट. हु इज विशाल? विशाल इज ए डेटोर. अब क्या करना? पहले कैंसल द न्यू बिल. देखिए ना न्यू बिल का अमाउंट कितना है? 16,400 है. बाद में क्या हुआ? 50% रिकवर्ड. 50% ऑफ 16,400 कितना हुआ? 8,200. अनदर 50% क्या होता? बैड डेट्स होता. वो कितना आया? 8,200. बाद में क्या करना? शो द जर्नल एंट्रीज विथ नरेशन इन द बुक्स ऑफ अक्षय. हु इज अक्षय? ड्रॉयर. हु इज ड्रॉयर? आई, वी, हमें, हम, नानू. Shall we write the entries? Journal entries in the books of Akshay. Who is Akshay? Drawer. चालू करेंगे? Shall we start? Simple, my dear student. Start your solution from the beginning. कौन सा डेट है? देखिए ना ये 1st जनवरी को क्या किए? अक्षय draws a 2 bill. When the bills are drawn, we can say that bills receivable increased, debtor decreased. Bills receivable increased, asset increased debit, asset decreased credit.
हु इज डेटॉर? डेटॉर इज विशाल. अब एंट्री क्या होता? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, इंस्टेड ऑफ राइटिंग डेटॉर, इंस्टेड ऑफ राइटिंग ट्रेड रिसीवेबल, राइट विशाल. कितना बिल ड्रा किए आप? 1 जनवरी है ना, 1 जनवरी 18. क्या लिखना? फर्स्ट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, second bills receivable account debit, debtor. Who is debtor? Vishal's account. What is the amount of the first bill? 16,000. बाद में 25,000. कुल मिला के कितना हुआ? 41,000. नरेशन लिखना. Being two bills drawn after every transaction, I have a culture of closing particulars column to make the presentation so attractive. बाद में क्या किए? After drawing the bill, क्या हुआ? On 4th April को रिन्यू करना. रिन्यू करना बोले तो क्या करना? Cancel the first bill. When you cancel the first bill, please remember, whenever the bills are cancelled, obviously we have to say that debtor increased, BR decreased, because BR तो हमारा पास ही है ही. BR को endorse भी नहीं किए, BR को discounted भी नहीं किए. BR is with us only. Just we have to reverse the drawn entry. Debtor increased debit, BR decreased credit. कौन सा बिल? पहला बिल. अब एंट्री क्या लिखना? ऑन 4th अप्रैल को. 4th अप्रैल को क्या लिखना? अब डेटॉर्स अकाउंट डेबिट. हु इज डेटॉर? विशाल्स अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. कितना है मां फर्स्ट बिल का अमाउंट? 16,000 है ना, लिखो 16,000. being first bill cancelled. हुआ? अब फर्स्ट बिल तो कैंसिल हो गया, बाद में क्या करते हैं? देखिए ना, जस्ट एडजस्टमेंट. फर्स्ट बिल तो कैंसिल हुआ. ड्रॉ द न्यू बिल. वो अब न्यू बिल ड्रॉ करते हैं अलॉन्ग विथ व्हाट? इंटरेस्ट. अब क्या होते हैं? न्यू बिल्स रिसीवेबल इंक्रीज्ड डेबिट, डेटॉर डिक्रीज्ड क्रेडिट. वो तो इंटरेस्ट है ना, इधर क्या है? इंटरेस्ट 400 है. इंटरेस्ट इज इनकम. इनकम क्या करना? क्रेडिट करना. ये कुल मिला के आपने एंट्री पास करना. न्यू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कितना है? वो न्यू बिल्स रिसीवेबल 16,400. विशाल को कितना लगता? 16,000. न्यू इनकम कितना हुआ? 400. अब एंट्री बोलिए ना. न्यू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू विशाल्स अकाउंट टू इनकम, दैट इज इंटरेस्ट अकाउंट. कब? सेम 4th अप्रैल. नाउ लेट अस राइट 4th April 18, that is new bills receivable account debit 16,400 dash to Vishal's account dash 16,000 to interest account. ये इंटरेस्ट तो क्या है? इनकम 400. being न्यू बिल ड्रॉन. हो गया? न्यू बिल तो ड्रॉन हुआ. बाद में देखिए ना क्या हुआ. ऑन 25th March 18 रिटायर्ड द सेकेंड बिल. सेकेंड बिल क्या हुआ? अब रिटायरमेंट हुआ. रिटायरमेंट हुआ तो क्या करते हैं? कैश रिसीव्ड. आपका कैश इंक्रीज हो गया, डेबिट. ये तो रिबेट एक्सपेंसेस है, इसको डेबिट करना. बाद में क्या हुआ? बिल्स डिक्रीज हुआ. कौन सा बिल? सेकेंड बिल. इट इज टू बी क्रेडिटेड. It is nothing but retirement of a second bill is nothing but we are receiving money from second bill through Mr. Vishal.
विशाल नहीं आता, अब सेकेंड बिल आता. सो क्या करना एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, डोंट यूज बैंक, कैश ओनली. कैश अकाउंट डेबिट, rebate account debit, 2 second bills receivable account. Shall we write the entry? Please try to understand. I am explaining in so detailed way and beautiful way. I hope you people are understanding when compared to earlier problems. Please give your comment whether you people are understanding or not. It happened on what date? 25th March 18 को. क्या लिखना अब? कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट, 2 second bills receivable account. कितना है अमाउंट? 24,750. रिबेट इज 250, 25,000. Being second bill रिटायर्ड. मालूम हो रहा है ना? ओके, ये तो रिटायरमेंट हो गया. बाद में क्या हुआ? ऑन 7th जून विशाल तो इंसॉल्वेंट हो गया. इंसॉल्वेंट हुआ तो क्या करना? कैंसल द न्यू बिल. व्हेन न्यू बिल कैंसल, व्हाट हैपेंड? डेटॉर इंक्रीज्ड, BR decreased. Always remember, whenever the bill dishonored, debtor increased. Since BR is not discounted, BR is not endorsed, BR is not sent to bank for collection, still the BR is available with us only, BR decreased. अब क्या करना? debtor को increase करना debit, BR को decrease करना credit. कौन सा बिल है ये? न्यू बिल है. उसका अमाउंट क्या है? 16,400 है ना. कब? 7th जून. कब? 7th जून 18 को. क्या करना? डेटॉर इंक्रीज्ड, विशाल्स अकाउंट डेबिट टू कौन सा बिल है? व्हाट बिल इट इज? न्यू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. उसका अमाउंट कितना है? 16,400 है ना. बीइंग न्यू बिल कैंसल्ड. अब तो कैंसल हुआ. बाद में क्या करना? कैंसल होने के बाद देखिए ना, 50% रिकवर्ड किया तो आपका कैश इंक्रीज होता डेबिट, बिकॉज यू हैव रिकवर्ड फ्रॉम द प्राइवेट एस्टेट ऑफ विशाल. फ्रॉम योर डेटॉर यू हैव रिकवर्ड, मीन्स यू हैव रिसीव्ड. कैश तो इंक्रीज हुआ. बाद में बैड डेट्स हुआ. बैड डेट्स मीन्स व्हाट? एक्सपेंसेस. अकॉर्डिंग टू द 5 स्टार एक्सपेंसेस क्या करना? उधर भी डेबिट करना. सो एंट्री क्या होता? अब कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट. इट इज रिकवर्ड फ्रॉम whom? We have recovered from Vishal. Vishal is to be credited because you have recovered from the private property of Vishal, right? अब क्या लिखना? सेम डेट 7th जून 18. बैंक नहीं लिखना, कैश ही लिखना. कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट to Vishal's account. How much amount, my dear student? 8,200, 8,200. कुल मिला के 16,400. क्या लिखना? नरेशन. बीइंग 50% recovered from the private property of Vishal. मालूम हुआ my dear children? I hope I explained in better way in second class, in second problem, I think, when compared with the first problem. I hope you understand in a better way, right? Please go through all these transactions. Try to understand in a maximum way. Make sure that you are getting some amount of benefit
from these classes? Please give your comment. Please give your reply whether you understood or not. Thank you. Bye bye. Namaskar. All the best.